ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਫੈਡਰਲ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮਾਇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਨਿਤ ਨਵੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਲਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਪੋਲਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ जानकारी करने साझी ते याद भी करवाने जी आशा। जी हाँ, जितने भी लिसनर्स इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं जी एंड वेलकम एंड खुशामदीद। और आज जो इंटरेस्टिंग बातें होने जा रही है वो है 2025 फेडरल इलेक्शंस की। आप सभी को पता है 28 अप्रैल विल हैव अन प्राइम मिनिस्टर, अ न्यू गवर्नमेंट, और कौन ये गवर्नमेंट रन करेगा ये बाद में पता चलेगा। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द वोटर्स, हाउ यू गो आउट एंड वोट। खैर, कुछ दिनों तक ये रोला रप्पा था कि लिबरल्स जो है वो आगे बढ़ गए हैं काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स के साथ, लेकिन पिछले दिनों एक पोल हुआ जिसमें कंजर्वेटिव लीड कर रहे फर्स्ट टाइम इन फेडरल कैंपेन। और ये क्या है इसके बारे में आज हम जिक्र करने जा रहे हैं। और फॉर द फर्स्ट टाइम इन द 2025 इलेक्शन कैंपेन अ पोल हैज़ इमर्ज्ड शोइंग द कंजर्वेटिव्स इन द लीड। Just published surveyed by Innovative Research had the Tories at 38% to the Liberals at 37%, and that again is just 1% difference. Although the results would likely translate into a Liberal minority government, it's the first of more than 24 polls published since the March 23rd start of the campaign that had the Tories out front. The Conservatives have narrowed the Liberal momentum gap. The Liberal campaign is still scoring more points with more people, but their advantage is much smaller, declared a statement by Innovative Research. Surveys released by 7 other major pollsters all continue to show the Conservatives trailing by as much as 9 points. A Nanos poll published Wednesday, for instance, had the Liberals at 45.8% to the Conservatives at 36.7%. A post-media Legger poll released Wednesday had the Liberals at 44% and the Conservatives at 38%. Aside from the Innovative Research poll, the only other point of light for the Tories had been and Abacus data poll published Sunday, which showed the Liberals and Conservatives tied at 39%. Given the efficiency of the Liberal vote, however, Abacus noted that a tie is effectively a Liberal victory. In the past 2 federal elections, the Conservatives have actually garnered a plurality of the popular vote but won far fewer seats than the Liberals. This is due to the fact that Liberals excel in tight ridings where it can take as little as 36% to win a seat. The Conservatives caucus, by contrast, is composed of prairie MPs occupying extremely safe seats. Any increase in Conservatives' vote share in those areas is effectively wasted. The Innovative Research poll also had good tidings for the Conservatives in its regional results. The party is leading in BC and the Ontario was tied with the Liberals at 41%. However, this contrasts with this week's Legger post-media poll which found that the Liberals have a 10-point lead in BC and Ontario, despite the Conservatives having higher support in those provinces than they did in the last 2 elections. In BC and Ontario, Mark Carney's Liberals hold a 10-point lead over Pierre Poilievre's Conservatives. That's despite support of Poilievre's troops now being higher in both BC and Ontario than it was in either the 2019 and 2021 federal election. The Innovative Research poll also showed a bit of resurgence for both the NDP and the Bloc caucus, both of which would likely result in trimming the size any future Liberal caucus. The 2025 election is already being defined by wild swings in polling and large differentials between competing pollsters. Only 3 months ago, the Liberals were on course of a historic wipeout. Now, select polls have them favored to win one of the most commanding Liberal majorities in Canadian history. As noted by Abacus data, David Collado, one of the variables that pollsters are having to manage in 2025 race in voter turnout.
Unlike the more somnolent elections of 2019 and 2021, the much more contentious 2025 is likely to feature an uptick in its voter participation. As Collier said in Wednesday's social media post, it looks like one of the big areas of disagreements among some polls is what non-voters in 2021 are going to do. Abacus Data is attempting to manage this by segmenting out 2021 non-voters who are planning to cast a ballot in 2025. Among that specific demographic, there is a comfortable conservative lead of 40% to the Liberals' 31%. So there's a lot that we have to look into दीदी और जो सबसे बड़ी बात है जो हमारे 2025 elections के demographics change कर सकते हैं वो है voter turnout. So that's something that we have to focus on and the political parties have to focus on. ਬਾਕੀ ਅਸ਼ਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ 2021 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਉਹ ਜੇ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਗੇ ਇਹ ਭੁਗਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 40% ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਈ ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਉਹਦੀ ਨਿਸਬਤ ਜਿਹੜੀ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 31% ਵੋਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੋਲਸ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਲੀਡਿੰਗ ਫੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 8 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਤੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਆਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਲਕਿ ਨਸ਼ਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਉਹ ਟਰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਗਾਹ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲਸ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਨਤੀਜੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਨਿਗਾਹਖੋਰੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕੱਲ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਰੁਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੋਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ ਚੜ੍ਹਾਅ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਔਰ 2025 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਆਸ਼ਾ ਨਾ ਅਖੀਰਲੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੁਝ ਮਾਰਾ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਪੋਲਸ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਨੋਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਫੇਰ ਬਣੇ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਦਿਨ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਨੇ and it's all taxpayers money which is going to be wasted if that's what happens. खैर बहुत सारी बातें हैं और 2025 फेडरल इलेक्शन इज गोना बी वेरी वेरी चैलेंजिंग खास तौर से बिकॉज ऑफ आवर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और बहुत कुछ कल जो उन्होंने कनाडा का नाम ना शामिल करना टैरिफ्स लिस्ट में और उनका क्या डिसीजन है क्या करना चाहता है क्या होगा विद इन फ्यू डेज वी माइट हियर मोर और उसके बाद पता चलेगा कि who actually could be the best leader to actually deal with Donald Trump, to have conversations with him. ये जो बातें हैं हर महफिल में आजकल डिस्कस हो रहा है and let's see what happens. वैसे दीदी आपको पता है कि सरी के भी काफ़ी राइडिंग्स है जिसके बारे में बहुत कुछ सुनने को मिल रहा है बहुत सारे कैंडिडेट्स को पार्टीज बाहर भी कर रहे हैं और रिप्लेसमेंट्स आ रहे हैं रिप्लेसमेंट्स कहाँ आ रहे लेकिन सरी की एक राइडिंग सरी लैंगली एक्चुअली एसोसिएटेड फ्रेजर हाइट्स एंड लैंगली टाउनशिप राइडिंग के लिबरल कैंडिडेट नसीमा नास्तो जो उस राइडिंग के लिए अक्लेम की गई थी फॉर फ्रॉम द लिबरल्स पिछले दिनों उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि शी इज़ गोना स्टेप बैक ड्यू टू हर पर्सनल रीजंस और she doesn't want media or anyone else to contact her because she wants privacy और ये क्या जो रीज़न हुई है उसकी पर्सनल कोई इश्यूज़ के वजह से शी स्टेपिंग बैक हो सकता है कि यू नो एनीथिंग फैमिली इश्यूज़ भी आ सकते हैं लॉट ऑफ थिंग्स कैन कम अप और ये बात सुना जा रहा है कि जॉन एल्डक जिन्होंने क्लोबरडेल लैंगली राइडिंग के MP थे जिन्होंने प्रोविंशियल इलेक्शन के वजह से वो MP से रिज़ाइन करके वो आए थे लेकिन ही लॉस्ट हिज प्रोविंशियल इलेक्शन और अब
वो उनका नाम आ रहा है कि ही इज़ गोना बी प्रॉबली रनिंग फ्रॉम लिबरल्स एट फ्रेजर हाइट्स एंड लैंगली टाउनशिप. लेकिन जैसे ही ये डिक्लेरेशंस हमें पता चल जाएंगे देन वी विल लेट यू गाइस नो अबाउट इट. लेकिन जब लैंगली के बारे में बात करते हैं तो बहुत कुछ लैंगली के बारे में भी इश्यूज आ रहे हैं. कहते हैं फ्रॉम हाउसिंग टू हेल्थ केयर लैंगली वोटर्स वे इन ऑन द बिग इलेक्शन इश्यूज. Region split into 3 ridings for 2025 federal election as population swells. Or one of BC's fastest growing communities is split into 3 separate ridings, and polls suggest all 3 of them could be hotly contested on election day. For the 2025 federal election, Langley has been redrawn from 2 to 3 separate ridings: Abbotsford South Langley and Langley Township, Fraser Heights, formerly Langley Aldergrove, alongside the long-standing Cloverdale Langley City, which also had minor boundary changes. According to the 2024 census, the combined population of both Langley Township and Langley City has reached 197,585, up to about 17% compared to 2021. The steady population growth has led to a host of changes and challenges. Our Langley voters ahead of the federal election finds out what matters to them. Our Heather जो Jenkins है, Worcester community grow right outside her storefront. She's run One Fish, Two Fish seafood shop in Langley City Centre for 27 years. There's more apartment buildings opening up, more townhouses. Is going to be a bursting city in no time, she said. Hopefully we keep up with the services that we need. Langley City has set an annual housing target of 1,844 net new builds each year. During this period of growth, the community's homeless population has also grown. According to the 2023 homeless count in Greater Vancouver, there were 235 homeless residents in Langley, up 12% from 2022. Homelessness is a big issue, said Corina Orboko, a healthcare worker in Langley. Some services for folks who are struggling with mental health and addiction issues, I think, are a little bit on the low side or not as accessible in Langley. Residents also critical of healthcare in the region, which is largely served by one hospital, Langley Memorial. That is among the centers that are on the front lines of emergency rooms overcrowding in BC. Georgina Loosley, 77, is among the residents who had trouble accessing services over the years. When I've been ill, it was long wait, said Loosley. Sometimes it's also annoying that you had to wait for hours to get in when you were in pain. Another person in Langley said she avoided the hospitals altogether because of lineups. I had an appointment for a mammogram, so I tried to book an appointment at Memorial Hospital, but it was 3 months or more, so I ended up booking it in Vancouver, and it was only a month. We need more clinics here. Construction for the Surrey Langley SkyTrain extension is ramping up, and that means closures. Crews have closed off busy stretch for the Fraser Highway in Surrey as they build overhead SkyTrain. In Langley City, the combination of street construction and growing population has led to increased congestion on some streets. The traffic has grown exponentially, and congestion on the roads, especially in the city center and the area, make it very tough to get around. A SkyTrain extension connecting King George Station to Langley City Center is expected to be completed in 2029. I think it might help the congestion if people take the transit and SkyTrain, she said. Based on modeling and analysis of the 338canada.com, all 3 Langley ridings are narrowly contested, with Langley Township, Fraser Heights, and Cloverdale Langley City leaning in favor of the Liberals, while Abbotsford South Langley is considering a toss-up between the Liberals and Conservatives. So this is the situation in Langley right now. ਬਿਲਕੁਲ ਆਸ਼ਨਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਦੇਖਦੇ ਦੇਖਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਵਾਰੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਿਆ, ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬਸਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਆਮ ਸ਼ਾਂਤ ਜਿਹੜਾ
ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹੋਰ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਇਲਾਕਾ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲੋੜਾਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਤੇ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਟ੍ਰੇਡ ਵਾਰ ਦਾ ਰੌਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ ਗਾਹ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਈਡਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ 100% ਜਿਹੜਾ ਗਾਰੰਟਡ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਈਡਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਹ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇੱਥੇ 100% ਪਕੜ ਹੈ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਹੈ ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਸਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਯਕੀਨ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਬਾਕੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਗਾਹ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ Yes, so Langley is going to be very, very interesting. Let's see if Cloverdale, जो MP sitting MP उस वक्त था, क्या नाम John Aldick, last election में, he actually resigned and he ran for provincial. Now he's going to be back. सुनाई जा रहा है Fraser Heights, Langley Township riding में will he be able to get that seat from the Conservatives? Well, Conservative is holding that seat right now. और उसके बाद जो another riding जो Cloverdale Langley वाली riding they're saying it's going to be tough and Liberals are actually in the lead of getting that seat, but will Conservatives be able to hold that seat? Because lately Tamara Johnson just became the MP for that riding, so let's see if she has enough support of Conservatives out there and she can keep the seat, or is it going to be leaning towards the Liberals? Or फिर Langley South wala jo riding hai, that is something which is very much interesting as well. ਬਿਲਕੁਲ ਆਸ਼ਾ ਨਾ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦਾ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਉਸ ਦਾ ਬਦਲ ਜਾਣਾ ਔਰ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਰਥਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਹੈ ਉਹ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ और लगते हैं बाकी 3 हफ्ते रहते हैं अजय वैसे दीदी अक्सर ये कहा जाता है मेजॉरिटी पीपल ये कहते हैं कि जो वोट्स है वो कैंडिडेट्स को नहीं पार्टीज को दिया जाता है कभी कभी कैंडिडेट्स के तकदीर अच्छे होते हैं कि पार्टी के वेव पे निकल जाते हैं और इस इलेक्शन में भी कहा गया है कि जो लीडर है उसके तरफ देखकर उसके झुकाव की तरफ देखकर उनका मुकाबला ट्रंप के साथ कैसे होगा ये देखकर वोटर्स वोट करेंगे तो हो सकता है कैंडिडेट्स इस बार भी लकी हो जाए लीडर के पीछे पीछे उनके भी सीट पक्का हो जाए बट अ लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग कि इस वक्त जो अगर कोई भी लीडर इंडिपेंडेंट खड़े होते तो दैट वाज नॉट गोना बी पॉसिबल लेकिन हाँ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के लिए अभी भी चांसेस है कि दे कैन गो फर्दर अहेड तो ये देखने वाली बात है कि इस बार इलेक्शन में लोग क्या वाकई लीडर्स को वोट्स देंगे पार्टी लीडर के वजह से जो वेव है वो होगा बहुत कुछ देखने वाले हैं और ख़ास तौर से कहा जाता है कि जो बीसी है बीसी में जो पहले होल्ड था इट वाज अ वेरी हाई होल्ड ऑफ कंजर्वेटिव्स लेकिन आजकल लिबरल्स आगे निकल गए नंबर्स में वो कहते हैं कि बीसी में इस वक्त जो होल्ड है वो लिबरल्स के है लेकिन बीसी के कौन से राइडिंग्स है क्या इनमें हमारे सरी के कोई राइडिंग्स है सरी के राइडिंग्स के बारे में लोग क्या कहते हैं बहुत कुछ सोशल मीडिया में हम देखते हैं सुनते हैं लोगों से पता करते हैं आजकल तो कहते हैं कि जी एक दूसरे के साइंस तोड़ने में लगे हुए हैं एक दूसरे के साइंस के वजह से प्रॉब्लम्स आ रही है सो लॉट ऑफ थिंग्स आर बीइंग डिस्कस्ड इस वीकेंड को क्या होता है ये भी हम आपके तक लाकर पहुंचाएंगे बिकॉज देयर इज अ लॉट व्हिच इज गोइंग टू हैपन दिस वीकेंड और इस वीकेंड पे हमारे जो वाइट ट्रक वाले जो राइडिंग है दीदी साउथ सरी वाइट ट्रक उस राइडिंग के जो लिबरल कैंडिडेट है उनके कैंपेनिंग ऑफिस की ओपनिंग है टुमारो व्हिच इज गोना बी समथिंग एवरीबॉडी इज गोना बी लुकिंग फॉरवर्ड क्योंकि ये राइडिंग जो है इस वक्त कंजर्वेटिव के हाथ में है जी बिल्कुल अशर नाल दी नाल ये भी गल है कि दिन तां विच हुण बहुते ज़्यादा बन्ने दिन तां वैसे ही बड़ी तेज़ी नाल जांदे आ और इलैक्शन के मामले दे विच तां मन्नी हुई गल है दिन ते रात दे विच किस प्रकार तब्दीली आउंदी है वो साडे सारिਆਂ ਦੇ सामने है और असीं इस नूं देखदे आ रहे हां अगाउण वाले जिहड़े 23-24 दिन ने उन्हां दे विच किन्नी तब्दीली आउंदी है वो भी अपने आप दे विच एक इतिहास ही सिरजेगी अशर बिल्कुल सो स्टे ट्यून्ड विद मीडिया वेव्स हम आपको हर एक इन्फॉर्मेशन
फेडरल इलेक्शन के बारे में देते रहेंगे. फ्रॉम नेक्स्ट वीक वी विल बी हैविंग कैंडिडेट्स इन आवर प्रोग्राम्स एज वेल. तो ज़रूर साथ देते रहिए, सुनते रहिए www.mwlive.ca. Until next time, goodbye and be safe. ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਤੇ ਸਾਥ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ.